Good morning. So may I have your attention, please? So this is Devin Prasad, and as part of this demonstration, I am going to demonstrate that an important concept in the computer science is that the students find very difficult to understand is how the computer is doing or converting everything into the binary number, because computer has a binary, or everything has to deal the computer in the binary number system. And as we human being are very familiar with the some other system, so how easy it is and how the computer is understanding or doing everything in the binary number. तो ये मैं एक थोड़े से 10 से 15 मिनट में I'll try to convince you that how easy the concept is and how easy it will become for the student. Student find is very difficult for most of the time. So for that I'll be needing a comparison between the two systems, our system and the computer system. So let me draw it first. So meanwhile you please look at this also. So as we know, first let me draw it, and please forgive me for my bad drawing. This is our system and this is, and the topic is computer doing binary conversion. Date. Okay. So just to begin with, कैसे हम लोग समझ लेते हैं कि if we have given a number, let's say 4, it is a decimal number 4, हमें एक नंबर मिलता है 4.5, हम इसे भी समझ जाते हैं कि ये भी डेसिमल नंबर है, it is integer number, it is float number. There are two parts, fraction part and integer part. There is only a whole part. And कभी हमें दिया जाता है a, so we are going to understand it very well that okay, it is some alphabet, English language alphabet A. So there are 26 letters. So how we understand that? So because we are trained for it, we have given some knowledge. Okay, we have taught that okay, this is the English language alphabet and this is the capital letter A, and these are the numbers, and we always do our arithmetic in the decimal number system, and our decimal number system is comprising of 10 digits starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and any number which we will deal, and as the human deals are comprising out of this binary number or a decimal number set. Okay, so ये हमको पहले से गिवन है, ये हमको नॉलेज पता है, तो इसलिए हमें कोई भी अरिथमेटिक में लेट्स से अगर हमें दिया गया है टास्क, तो हमें 4.5 या 4.45 दिया जाए तो हमें पता है कि ठीक है ये दोनों जो जाएगा और ये हो जाएगा 8.5. We do the simple arithmetic very easily, but the same thing we want that computer has to do. और कंप्यूटर तो एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और किस तरीके की मशीन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये कहती है कि ये सब दो वोल्टेजेस समझती है, 0 और या 0 और +5 प्लस वोल्ट +5 वोल्ट और -5 वोल्ट. तो 0 और 1 में काम करने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. तो अब इसको कुछ भी काम करवाना हो इससे, तो हमें 0 और 1 में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हमारे पास में एक डेसिमल नंबर सिस्टम है अपने नंबर्स बनाने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के पास में कौन सा नंबर सिस्टम है जो ये अपने लिए यूज करता है. तो इसके पास एक ही नंबर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 and 1. उसमें केवल 2 डिजिट हैं, वन इज 0 अनदर इज 1. तो अब इसे जो भी अपने लिए नंबर बनाना है वो सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स का यूज करके बनाएगा, दैट वी कॉल द बाइनरी नंबर. नाउ अगर हम इसको कहीं से कैरेक्टर ए भी देंगे
So how it is going to understand this particular character? And if we are giving it 4, so how it is going to understand this 4? And if we are giving 4.5, so how it is going to understand this 4.5? So there is only a simple logic. It is not understanding these exactly, but if you convert these number into the binary number, let's say 1 0 0, and similarly 1 0 0 plus 0 1. If we are converting this number into the binary number like this, and simply if we are converting this A in the sequence of 1 1 0 0 0 1, then it is going to understand all these characters as well as digits. So the ultimate thing is what? Convert these letters, convert these digits or numbers into the binary form. So now the conversion has to deal with only two things: how we are converting numbers into the binary, and how the computer is going to understand characters. So for the character, जैसे हमें ये पढ़ाया जाता है कि देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ये सिखा देते हैं कि भैया देखो आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में एक कैरेक्टर रखा हुआ, हर कैरेक्टर के लिए एक बाइनरी कोड भी बना के रखा हुआ। अभी डेसिमल नंबर में लिख लें, लेकिन वो एक्चुअली में एक बाइनरी कोड होता है और बाइनरी में लिखा होता है। तो ऐसे लिखा हुआ है, तो जब भी आप कोई कैरेक्टर आप पास कर रहे हो कंप्यूटर को, वो इस टेबल को कंसल्ट करता है। इस टेबल के आगे, इस लेटर के आगे जो भी बाइनरी नंबर लिखा हुआ है उसको लेके फिर वो आगे चलता है। So this is what the simple character transformation into the translation into the binary code, and this table is known as ASCII table. So सबसे पहले जो टेबल बनी थी वो ASCII थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज की डेट में ये यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम में बदल गया है, यानी कि ये टेबल यूनिकोड कैरेक्टर हो गई है। फर्क क्या था? थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है कि यहाँ 8 बिट में लिखा जाता है कैरेक्टर, यूनिकोड में 16 बिट में लिखा जाता है। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ गए, ये टेबल का साइज बढ़ गया और इस टेबल में अब ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे जाने लगे। ये हमें बेनिफिट मिला। ठीक है, ये तो था कैरेक्टर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की बात। तो नंबर्स कैसे कन्वर्ट होगा? तो नंबर्स के कन्वर्जन को हम दो सिंपल फॉर्मूले से याद रखेंगे। इट्स वेरी इजी, देयर इज नो डिफरेंस। कि अगर हमारे पास नंबर होगा इस तरीके का, तो हमारे पास में दो पार्ट हो गए। ये हमारा हो गया होल पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट के कन्वर्जन के लिए तो नियम है, वो बना है कि डिवाइड बाय 2 till we are getting a quotient which is smaller than 2, और जो भी रिमाइंडर आता जाएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। और ये वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसके लिए होता है मल्टीप्लाई बाय 2। तो तब तक मल्टीप्लाई करेंगे इधर टिल द मोमेंट वी आर गेटिंग अ जीरो वैल्यू और वी आर गेटिंग अ रिपीटेड सीक्वेंस, और हम अपने हिसाब से भी 3-4 कैरेक्टर के बाद में रोक सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास में नंबर है 48, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा 48 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 टाइम्स जाएगा, और 24 टाइम्स जाएंगे, बाद में रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर जो 24 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 टाइम्स जाएगा। 12 टाइम्स जाने के बाद में जो रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर आया 1। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नाउ इट इज स्मॉलर देन 2, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और इस वाले सीक्वेंस को इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो 48 का जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा 48, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है इसका बाइनरी बनेगा 110000 110000 4 टाइम्स, ये बन गया फाइनली। गॉट इट? ऐसे ही इसका जो अगर लेट सपोज हमें एक जगह कहीं पे नंबर होता लेट्स से 0.45 और इसका बाइनरी बनाना होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। तो 2 5 10, 1 2 8 9, 0.9, और इस कंडीशन में हम ये वाला पार्ट लेते हैं। तो ये एक वाली 0 ले लेंगे,
फिर उसके बाद 90 को 0.90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.80, अब इस 1 को ले लेंगे। फिर 0.80 इंटू 2 करेंगे तो 2 8 जा 16 यानी कि 1.60, अब इस 1 को ले लेंगे और इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं 0 0 1 1 0.011। अब अगर ये नंबर होता 48.45 तो हम इसको ऐसे लिख देते, फॉर द 48 पार्ट वी आर गेटिंग दिस बाइनरी and for the point fraction part 0.45 part we are getting the number 0 1. So the and complete number will become this 0.011. So this is how the computer is converting all the numbers into the binary form. But if we do this multiplication algorithm or division algorithm to convert the binary number, it will take a lot of time, but there is a shortcut for it. The shortcut is very simple, and I am going to tell you. If you are not going for this procedure, but firstly you go for this procedure because there is a learning. But if you do not want to go for it, so there is a shortcut, very easy shortcut to convert every number into the binary number. कैसे convert करेंगे binary number में? हमें सारे numbers को इस sequence में लिख लेना। हमें पता है place value क्या होती है, तो हमें पता है कि जो भी यहाँ पे होगा right side पे, इसे कहते हैं least significant digit, और जो भी लेफ्ट तरफ को चला जाएगा वो हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम इसको बोलेंगे 2 to the power 0, और 2 to the power 0 को मैं इसको 1 लिख रहा हूँ। 2 to the power 1 को मैं लिख रहा हूँ 2, तो 1 2 4 8 16 32 so on so forth। अब मान लेते हैं आपको बनाना है 45, तो 45 कैसे बनाएंगे? तो जहाँ जहाँ आपको प्लस करने से 45 मिलने वाला है वहाँ 1 1 रखते चले जाएंगे। सबसे बड़ी वजह से स्टार्ट कर लेते हैं 32, ठीक है ले सकते हैं। 32 में ऐसा क्या जोड़े कि 45 की तरफ को बढ़ाया जा सके, तो 32 प्लस अगर 16 करते हैं तो ये बनता है 6 2 8 और 48 बन जाता, तो इसको तो लेना नहीं है। 32 प्लस 8 करते हैं तो 40 बनता है, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। 40 बन चुका है, 45 बनाना है तो 40 बन चुका है, ये 4 और ले लेते हैं तो 44, और फिर बाद में यहाँ पे 1 ले लेते हैं और बीच में लिखेंगे 0। तो ये देखो कितना सिंपल सा सीक्वेंस है बाइनरी कन्वर्जन करने का। ओके, तो सर इस तरीके से अगर हम कन्वर्ट करते हुए चलें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि देखो कंप्यूटर में तो एवरीथिंग हैज टू डील इन जीरोस एंड व्हाई, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक डिजिटल सर्किट है, वो दो ही वैल्यू समझता है, दो ही वोल्टेज समझता है, एक तो प्लस समझता है, एक +5 समझता है, एक 0 समझता है। तो 0 को हम लोग मान लेते हैं लॉजिक 0, और जो भी हमारा +5 वोल्ट है या -5 वोल्ट है उसको हम मान लेते हैं लॉजिक 1। तो अब इस डिजिटल सर्किट डिवाइस से जो भी काम करवाना है, वो जो भी काम करेगा उसको या तो 0 और 1 दो तरीके के नंबर ही चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल सर्किट है, और इसके अंदर में सारी चीज़ें डिजिटल सर्किट है जो 0 और 1 में ही काम करती हैं। और अगर इस कंप्यूटर से कुछ भी करवाना हो so you have to convert your input into the binary form, and once it is converted into the binary form the computer will do all the arithmetic. There are other algorithms in the computer to do that. So इस तरीके से कितने इजी तरीके से कंप्यूटर अपना काम करता है। तो this is the simple understanding of how the computer is doing binary conversion. Okay, thank you. So good morning. So may I have your attention please? Today I'm going to tell you how easy the file system is. There is an important and difficult concept in operating system, that is the file system, and how the student can easily understand that. So I'll come to that. So for that I'll take an example of real life example of a school system. So we have to connect these students with the real life examples that they see around themselves, so that they will be understanding the concept easily. So सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर कि we all have worked on the computer system, right? And हमें ये भी पता है कि हमें नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड ओपन करके कुछ लिखेंगे, सेव बटन दबाएंगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। वो फाइल क्रिएट हो गई तो उसके बाद हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो दिस इज व्हाट फाइल मैनेजमेंट। सो हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में
होता कैसे, और एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है फाइल मैनेजमेंट करना। तो इस छोटे से सिनेरियो को मैं आपको एक बहुत सिंपल सिस्टम से समझाता हूँ, और प्रोबेबली डेफिनेटली ईच एंड एवरीवन विल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेट्स से हम अपना एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं, ये मेरा एक केवी का स्कूल है, एक केवी स्कूल, एंड केवी स्कूल का ये पूरा एक सिस्टम है। तो इस पूरे सिस्टम का एक मैनेजर है जो हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं, तो वो प्रिंसिपल सर वो पूरे इस सिस्टम का मैनेजर है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मान लेते हैं ये पूरा हार्डवेयर है, और जब भी कंप्यूटर को हम बोलते हैं तो कंप्यूटर में बेसिकली 3 हार्डवेयर की बात हो रही होती है। एक तो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर, जो काम करने वाला है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेन प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ टेम्परेरी डेटा रखा जाता है, और सीपीयू यहीं पर डेटा को रख करके प्रोसेस कर रहा होता है। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूँ HDD, हार्ड डिस्क। ये हमारा होता है परमानेंट स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे परमानेंटली फाइल्स वगैरह रखी जाती है। तो बेसिकली हम 3 हार्डवेयर की बात करते हैं, और इन तीनों हार्डवेयर से जिनसे हमारा एक सिस्टम बन रहा है, जिसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, कोई मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको कह देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, ये केवी का स्कूल है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये केवी सिस्टम है, केवी का स्कूल सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अभी इस एनालॉजी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि जैसे केवी के स्कूल सिस्टम में एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं एडमिशन सेल, एडमिशन सेल। और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बच्चों का एडमिशन करवाना है, बच्चों को एनरोल करना है इस पूरे सिस्टम में। तो कोई भी बाहर से एजेंट होगा, वो एक बच्चे को लेकर के आता है, तो ऐसा तो नहीं कि सीधे प्रिंसिपल सर को मिला लेता है, तो वो सीधे सीधे कहाँ आता है, एडमिशन सेल में आता है। देन एडमिशन सेल क्या करता है, इस बच्चे का एक एंट्री एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा, जितने भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी, और फिर इस बच्चे को इस सिस्टम के अंदर में एनरोल कर देगा। अभी बच्चा केवी के ड्रेस पे करके किसी क्लास में, किसी एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कहीं पे आराम से सिटिंग होकर के किसी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने लगेंगे। तो नाउ इट हैज़ बिकम, ही हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केवी स्कूल। तो आप स्टूडेंट को यहाँ एनरोल कर रहे हो और इस सिस्टम का पार्ट बना रहे हो, और ऐसे जितने so many students are studying in this KV school, so those all are part of this system. अगर कोई बाहर से इसको देखेगा तो वो बोलेगा कि भैया देखो केवी स्कूल कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है इतने सारे स्टूडेंट्स का और कुछ जगह का जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर करके रखी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में केवी स्कूल सिस्टम को पूरा जो ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल सब मैनेज करने हैं एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एडमिशन सेल सिर्फ एक पार्ट है जिसकी भी जिम्मेदारी किसी एक पर्सन को दे रखी है, एक कंपोनेंट है जिसका काम है सिर्फ ये इन फाइलों को मैनेज करना। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फाइल्स होती है, ये फाइल्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ होगा, दैट इज योर डेटा, और डेटा इज नथिंग बट बाइट्स, सेट ऑफ बाइट्स। अब केबी में लिख सकते हैं, एमबी में लिख सकते हैं, जीबी में लिख सकते हैं, वो एक और मेजरमेंट यूनिट है, पर एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ बाइट्स। अब ये जो फाइल्स हैं ये भी आपके कहाँ बननी है, इस सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होनी है। तो इस सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होने के लिए भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइल सिस्टम, जिसको ये जिम्मेदारी मिली हुई है। It has given the responsibility that whatever files you are going to create on this hard disk, so please do some repository for it. तो ये फाइल्स, जैसे ये फाइल सिस्टम इस हार्ड डिस्क में क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये एक और चीज मेंटेन करके चलता है जिसे कहते हैं रजिस्टर, सॉरी डायरेक्टरी। और इस डायरेक्टरी में सिर्फ 2 चीजें लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है कि इस फाइल का नाम क्या है a.txt, और ये हार्ड डिस्क में कौन से ब्लॉक से या कौन सी स्पेस से कौन सी लोकेशन से स्टार्ट हुआ है, सो दैट स्टार्टिंग लोकेशन इज। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के लिए, और नाउ
ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाता है, वैसे ही कोई भी फाइल आपके हार्ड डिस्क पे बन रही हो तो उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन एक डायरेक्टरी में रखी जाती है और एक्चुअली दिस फाइल बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट डायरेक्टरी। और अब देखने वाले को क्या नज़र आता है, यूज़र को क्या नज़र आता है कि देयर आर अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूज़र के हिसाब से फाइल सिस्टम का डेफिनेशन ये हो जाता है कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि हमने इस रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझ लिया कि देखो स्टूडेंट को अगर अपने आप को फाइल्स मान लेता है तो जैसे वो एक स्कूल का पार्ट बन जाता है, वैसे ही अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में फाइल्स और जो ये डायरेक्टरी है सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट कि हाउ दिस पर्टिकुलर फाइल इज गेटिंग अलोकेटेड ऑन टू the completely different structure that is your hard disk। तो इसको समझने के लिए अब हमारे पास में हम एक छोटा सा और डायग्राम बना लेते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ये हमारे हैं ट्रैक और ट्रैक में डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में जिन्हें कहते हैं सेक्टर। नाउ ये जो भी हेड होगा और एक हेड होगा जो इस इन पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर में लिखने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए बना होता है। तो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर, लेकिन फाइल सिस्टम को इनके साथ में डील करना है तो फाइल सिस्टम मेक्स अपीयर दैट ऑल दीज सेक्टर्स अवेलेबल ऑन दिस सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन दिस फॉर्म। ये सारे के सारे सेक्टर्स इस तरीके से नजर आ रहे हैं, तो एक एब्स्ट्रैक्शन तैयार हो जाता है इन सारे सेक्टर्स का। ठीक है, अच्छा यूजर है, दिस इज यूजर। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे देखता है कि इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एंड मैनी फोल्डर्स। तो हम मान लेते हैं ये हमारी एक डायरेक्टरी है ए के अंदर एक डायरेक्टरी थी, बी के अंदर है, सी के अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल रखी है, लेट्स से a.txt। तो अब यूजर को तो ये नजर आ रहा है और यूजर कहता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ओनली दिस इज द फाइल सिस्टम, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फाइल सिस्टम के दो एंड है। वन एंड इज एट द हार्डवेयर साइड, अनदर एंड इज एट द यूजर साइड। सो एट द यूजर साइड इट इज नथिंग बट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस where all the files and all the directories are arranged in some manner, but on the other side ये सारी की सारी चीज़ें जो a.txt है वो ऐसे कर करके इन तीन ब्लॉक्स में अरेंज होकर रखा हो और ये जो डायरेक्टरी है सी, लेट्स से ए भी कहीं पे इस तरीके से रखी हुई। सो ये सी डायरेक्टरी यहाँ रखी हुई और a.txt के जितने भी बाइट्स थे वो यहाँ अरेंज होकर रखे और इन सबको मैनेज करवाने वाला बीच में कौन है कंपोनेंट, दैट इज योर फाइल सिस्टम। Now, by looking at this diagram, we can easily understand that this file system gives or does only three functionalities. There are only three functionalities that the file system is doing. First is your file management. File management means user is creating these files and directories, जैसे हम C drive, D drive में बनाते हैं। तो ये सारा ऑफर कौन कर रहा है? यूजर को फाइल सिस्टम ऑफर कर रहा है। सेकंड, जैसे ही यूजर ने बनाया और सेव किया तो ये सारी फाइल्स और डायरेक्टरी कहाँ अलोकेट होनी है? इस सेकेंडरी स्टोरेज में। तो दिस इज कॉल्ड फाइल allocation. So the second functionality is provided by the file system is file allocation, and the last one is your file access. File access is something like that. The file, ये जो फाइल है इसमें ये डेटा है, ये रिकॉर्ड्स, इनको हम बोल देते हैं रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। Now in record को access करना, so there are only two access methods are available. One is sequential access, second is direct access. In the sequential access, we are accessing records by records, and in the direct access, we can go to a particular record and can access that particular record only. Okay? So this is how easy the file system is. Thank you. So I think that with this real life example and analogy, the students are going to understand this concept well. Thank you.
So good morning. May I have your all attention, please? Okay. So today I am going to demonstrate, or I am going to present on a very important and very modern topic nowadays, that is machine learning. And as we know that most of the students are fearing about this buzzword, and this buzzword is very important. And if we are starting with this, what is machine learning and how it works, so everybody is wonder about it. So I am going to make it very easy and very easy to understand. That with that example, you are going to learn that okay, how easy the machine learning is. So I am going to make it easy. So for that, to begin with, I am giving you a small puzzle. I am writing it, and you please all note it down properly, and just note down the answer, and at the end I'll ask it from each one of you. So please pay attention to this. So I'm writing a sequence of data like this: 2, 5, then 10, then 17, and now I'm going to say that I'm going to ask that okay, what number will come at this place. I'm giving you 1 minute for question, so you please find it answer of it. So yes, ma'am, please can you tell me what will be the number that will come at this particular place? What's the number I have? Okay. Okay. Very good. So yes, definitely. So in this small simple example, you can see that I have given you few numbers. And the very simple answer, the very simple question is, what is the number at this particular place? To tell it, we have to look at these numbers very carefully. And whatever knowledge of mathematics we have to apply onto these numbers. क्या ये हो सकता है, क्या सेकंड नंबर के बाद ये पहला नंबर कैसे बन रहा है, किस तरीके का पैटर्न इसमें मिल रहा है. And once we figure out that particular pattern, we come up with a mathematical formula for it. That's it. And if we have done that exercise, so it means we have applied the machine learning to that. Okay, so let me tell you. So if I look at this number, so I'll say that okay, it is 1 square plus 1. The second number is nothing but 2 square plus 1. Third number is nothing but 3 square plus 1. Then fourth number is your 4 square plus 1. Now if we follow this particular pattern, so what will come at this particular place? 5 square plus 1, and the answer should be what? 25 plus 1, 26. Now the question is, can you figure out the formula which was underlying in this data sequence? Yes. If I say that okay, if any digit I am going to represent by x, then as per this pattern, the next number in the sequence will be x square plus 1. So I have derived that formula, y equals to x square plus 1. Now using that formula, I am going to predict any future value. For example, let's say in future this sequence is going on in that way, and I am going to give you that okay, I am giving you the 100 number for that sequence. So what will be the next number? So you have that formula. So you will 100, 1,000 plus 1. So you will say that 1,000, 10,000 plus 1. That will be the number predicted by this particular formula. That's the machine learning. This is nothing but exactly the machine learning. The same thing is going to happen in the machine learning. So now, what is the machine learning meaning is, so there is a huge data, and there is some algorithm, and this algorithm is digging inside into the data and finding this hidden pattern. And once this algorithm has find that pattern, that is called machine learning model. For example, in this example, the machine learning model is y equals to x square plus 1. And now this machine learning model can be tested with the real time data. So in next time, in the real time data, or we can say that unseen data, we are giving to this model, and this model is predicting. So it will give us a predicted value. So till the moment the algorithm is learning from the data by itself and coming to this particular model, that is called training. So this is nothing but training or learning. Okay, and once it has learned,
So we say that okay, it has figured out that particular model. So we say that okay, machine learning algorithm has given you a model, and now we use that model, we give it a real time data, and we get this some particular value. So this is called prediction. And whatever we are doing on the real time, this is sometimes is known as testing or validation. Okay. So how do we define the machine learning? So very simple definition. Now we can easily understand that definition. Okay, machine learning is nothing but learning of algorithm from the data itself without less or no intervention of the human being. ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन होने वाला नहीं है, ये अपने आप ही लर्न करने वाला है. जैसे एक ह्यूमन ने इस डेटा सीक्वेंस को देख के फिगर आउट किया और अपने दिमाग में कोई मैथमेटिकल नॉलेज जो उसके पास पहले थी that is synonymous to the algorithm, वो अप्लाई करता हुआ चला गया and figure out that particular pattern, or once that pattern has written in that formula, and that formula is going to be used further for future predictions. Similarly, the machine learning algorithm is going to learn from the data itself and coming out with some model, or that model is nothing but a mathematical formula, and that formula or mathematical model will be used for further prediction in the future. So this is what the machine learning. Now there is no problem in that. Okay, so this is one dimensional data. Sometimes we say that this is just one sequence of data, so this is one dimensional data. This can also be a two dimensional data. For example, let's say I am giving you some points in the two dimensional space. This is your x, this is your y, and these are the different points. Okay, now you will see that what is the beauty of this particular equation, a straight line equation. And we say that the straight line equation is nothing but ax plus b. Okay, so by fitting a straight line of this form onto this data, we are going to use this particular straight line equation for the future prediction. And this algorithm, this is nothing but algorithmic approach. We are applying to find this particular y equals to ax plus b in the given data is called regression. So जब हम लोग 7वीं 8वीं क्लासेस में पढ़ते हैं कि y इक्वल्स टू x प्लस b स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आज समझ में आता है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आगे जाकर के रिग्रेशन बन जाती है. तो जो टेक्निक जो एल्गोरिथम थी वो रिग्रेशन एल्गोरिथम है, जिसने आपको y इक्वल्स टू ax प्लस b दे दिया, एंड नाउ यूजिंग दिस y इक्वल्स टू ax प्लस b यू आर डूइंग द प्रेडिक्शन ऑन टू द 2D कॉलम. ओके, सो अलग अलग मैथमेटिशियन ने इसको अलग अलग तरीके से टैकल किया. जैसे अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये y इक्वल्स टू x प्लस b ऐसे नज़र आती है, और इसका एक तरीका है कि एक एरर की कौन सी लाइन सबसे बेस्ट फिटिंग लाइन होगी, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस सच लाइन्स पॉसिबल, बट विच लाइन विल बी द बेस्ट फिटिंग लाइन. सो उसको निकालने का तरीका होता है यहाँ से एक प्रोजेक्शन करा और यहाँ से हर एक पॉइंट से एक प्रोजेक्शन करेंगे इस तरीके से, इनको बोलते हैं एरर. So this is predicted value, this is actual value. Predicted minus actual is your error, E1. In that way, E2, E3, E4, E5 and E6. Then we will square each of error, E1 square plus E2 square plus E3 square plus E4 square. We will get sum of all squares of error. So this is called SSE, sum of squares of error. And then we will calculate the root of it. So root, we will calculate mean of squared error, then we will calculate RMSE. Okay, so by looking at this RMSE, we are going to set okay which particular line is going to be best fitting. And once we have obtained a best fitting line according to some criteria, we will stop, and then we will say that okay, we have found out that particular model. Okay, so in that line, this will be your y-intercept, that will be equal to b, and this will be the slope, y1 minus y2 divided by x1 minus x2. So this will be, and we will take any 2 point onto this line and calculate this particular slope x. So we will say that okay, let's say for example some as per some calculation we are getting value 2x plus 3. So this will be one model resulted, and now this model can be used for further prediction in the future. So this is what linear regression model. This is nothing but the linear regression model in the machine learning down in the last. Okay. So with this
there is one question always arises that is mathematics is actually required for learning, understanding the machine learning. So this is the question for you people that is it mathematics required? Yes, definitely. Firstly, the any machine learning algorithm deals with the numbers. So if we have to deal with the numbers, at least basic plus minus or basic such pattern recognition should be known to you, familiar to you. This equation should be known to you. Nobody, if you don't have any understanding with this equation, so you are not going to understand the regression concept. So this is what mathematics is very essential thing, or is actually important for understanding the machine learning. Okay, so this with this small demonstration, I hope that I have now given you a good understanding of the machine learning to you people. So next time whenever you see wherever the prediction of numbers, so definitely there is some machine learning algorithm, or there is some machine learning you are applying to the that particular problem. Thank you.